आएगा? इसमें बहुत लाइव भी होगा सर, फेसबुक लाइव भी चल रहा है अभी सर हाँ। क्या हुआ? क्या मायने रखती है जब आपने इस फिल्म की शुरुआत की थी, उससे पहले आप भी मानते थे कि गाना है? जी सुनाई नहीं। आपका जो गाना है ये लाइनें आपके लिए क्या मायने रखती है? इस फिल्म में आने से पहले क्या आप भी मानते थे हर गली में धोनी है? जी बिल्कुल, और ये देखा जाए तो एक तरीके का मेटाफोर है कि जो जो धोनी जो है वो हम लोग ड्रीम से दिखा रहे हैं कि आप चाहे कहीं भी हो, किसी भी सिटी में हो, लेकिन अगर आप सपने देखते हैं तो वो पूरा होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। उन्होंने फिल्म भी देखी, Tell us about your unfulfilled dream. What unfulfilled? सब पूरे हो गए, अभी नया बनाना है। Is that Shikhar Dhawan by any chance in the video, or is it a lookalike Sorry? of Shikhar Dhawan? no, that's a, I mean, I don't know, you found a look-alike, you found a look-alike. No, but it's not Shikhar. You just mentioned Dhoni watched the film. What was his reaction after watching the film? No, we were both silent for about 10 minutes after he'd seen the film. That goes to say that he must have liked it, yeah. There was nothing to say. इस गाने को बनाने की कोई खास वजह जो भी we all love धोनी but हर गली में धोनी क्या वजह है खास इसको? This is just to celebrate the film. और कुछ नहीं, celebrate the process that we'd gone through, the experience that we've gone through. And yeah, I mean, it's just a tribute and an ode to the man, to the film. So both of you, the vibes is very positive around the film. The response is really good. You people are nervous or excited? I'm excited because I have had great experience while shooting for it, so you feel better when you share that experience with people. You're saying you're excited, he's nervous. Do I look nervous? He said, I'm excited. I thought you're nervous. I can't speak for him. क्या कहना चाहेंगे? The response is really positive. और फिर उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती हैं। फिल्म क्रिटिक की बात करें या आम ऑडियंस की बात करें, बहुत सवाल आ रहा है और जो भी MS धोनी से रिलेटेड हमारा जो काम था हमने कर लिया, and now we look forward to the response that the audience has to give. Neeraj sir, there have been films like Bhag Milkha Bhag and Barricade which have won the tax-free status. So are you eyeing for the same somewhere? I think the studio will be in a position to answer this one better. Yeah. Neeraj sir, any plans to perhaps open Dhoni for a special song in the film? Or No. This is a biopic on him, not a situation like you suggested. इस song में One person at a time, please. फिल्म में कहानी पे बनती है। मैंने 5 बार ऐसा किरदार किया थिएटर में जब मैं इंजीनियर था, तो वो इंजीनियर पे कहानी नहीं थी, वो कहानी पे कहानी थी, प्ले था। तो बेसिकली अगर कहानी सुनाने लायक है तो आप कुछ भी हो तो आप पे फिल्म बननी चाहिए। शहीदों पे पिक्चर्स बननी चाहिए, क्रिकेटर्स पे क्यों? वही मैं बोल रहा हूँ ना, कहानी। नीरज सर से जाना जी हाँ जी, क्या? कि शहीदों पे पिक्चर्स बननी चाहिए जो इस वक्त हो रहा है, चल रहा है, उन पे पिक्चर बननी चाहिए। तो मैंने दोनों तरह की बनाई है. I think we make stories. It's not that every film should be a particular genre or anything of that sort. I think as storytellers we need to talk about everything, and this film is about the heroes in us. It's a very motivational, inspiring film, and that inspiration, that motivation can come from anyone. And also mind you that MS is a serving lieutenant colonel in the Indian Army. So that I think should answer your question completely. नीरज इस गाने में बहुत सारे अलग अलग लोकेशंस हैं और जो आपने शूट किया है क्या वो रियल लोकेशंस हैं और रियल लोगों के साथ जो एक्टर्स नहीं हैं उनके साथ आपने आप गाने की बात करें? Okay, the song, the concept has been approved by us, but it's not physically shot by me. The song was shot by an agency, and it was shot around I think 16 different states and places, just to show the diversity of India and to capture that particular image. When you do a film on a national figure like Dhoni, do you think
that will add on to your reach as an actor as well, because everyone in the country know Dhoni, they know their game. So when you play him on screen, does that increase your reach as an actor as well? Yeah, reach wise is fine, but it can work either ways. If you don't perform, then yeah. Yes. किरण मोरे ने आपको जितनी अच्छे से ट्रेन किया था उसके बाद शायद सचिन ने भी आपको नहीं पहचाना था, वो कंफ्यूज हो गए थे क्रिकेटर है ये एक्टर, बट वो दैट होल इंसिडेंट आप उनसे मिले थे, उन्होंने कुछ बताया आपकी? जी मैं नहीं मिला था, मैं BKC में प्रैक्टिस कर रहा था और सचिन फर्स्ट फ्लोर पे बैठ के देख रहे थे। तो बीच में जब उन्होंने ब्रेक लिया तो किरण मोरे सर और वो उन लोग के बीच में बातचीत हुई, तो उन्होंने शायद पूछा था कि कौन सा टीम से खेलते हैं। That's a huge compliment. just let it be. बट धोनी भी बन नहीं पाता, आई मीन हमारे कंट्री में स्पोर्ट्स को इतनी प्रायोरिटी ही नहीं मिलती, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? No, like Sushant just mentioned, Dhoni is a metaphor in the song. आप जो चाहें बन सकती हैं अगर आप उसको अपने पैशन से चेज करती हैं. दैट इज द एसेंस ऑफ द सॉन्ग. सुशांत, जो सॉन्ग अभी बता है गली गली पे धोनी है, क्या आप खुद गली क्रिकेट खेले हो क्या? गली क्रिकेट ही खेला हूँ उससे ऊपर कभी खेल नहीं पाया, इतनी काबिलियत थी नहीं, लेकिन इस फिल्म में पूरी कोशिश करी है कि अच्छा क्रिकेटर दिखूँ। ये गाना फिल्म में होगा या फिर प्रमोशन? No, this is only for promotions. It's not in the film. Like I said, it's a tribute to the experience that we had while making the film. So that's it. Is the film censored and what is the runtime? The film is in the process of that. But what is the runtime? We'll figure out once the censor. Neeraj, also for the fact that you made films on terrorists and terrorism, recently there were these URI attacks and of course the entire nation, the URI attacks recently which shook the nation. My question to you is, diplomatic talks as far as tackling terrorism is not really helping. Do you think it's time for people to take inspiration from your films and stories and how it tackles terrorists and terrorism and apply it in real life? No, I won't suggest that. That's an opinion in a story. Okay, and I don't think that any personal opinion that I have is supposed to be spoken on a public platform as this. It's for you to take whatever you want to take. I don't control it. I won't condition it. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you. Thanks for the Thank you. advice. Thank you. Thank you. Just few cutaways, if we can pause it.